बाहर आपको जिसको जैसे राधा सीता पार्वती अम्बा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में, जिसे सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके अपनी दुम को मुंह दबाए हुए सोई हुई रहती है, अचेतन डोरमेंट पोजीशन में रहती है। हठयोग से जगाओ तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। महर्षि अरविंद ने कहा भी इस काम के लिए प्रॉपर गुरु की बड़ी आवश्यकता है। तो आपको कुंडलिनी जागे नहीं जागे, मैं जो नाम जो बताऊंगा उसको जपोगे राउंड द क्लॉक। अब राउंड द क्लॉक कह दिया तो नींद में कैसे करेंगे? तो राधा जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। 15-20 दिन ध्यान करो, 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा है कि जपा जा रहा, मानसिक जप होना चाहिए और जीव नहीं हिले, फिर वो अजपा शुरू हो जाएगा, फिर चाहोगे तो बंद नहीं होगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान की बात तो भारत में दो धर्म पैदा हुए, जैन और बौद्ध धर्म। ध्यान की बात तो कहते हैं, मगर बाद में वो समाधि की बात नहीं कह करके समय तक सीमित हो जाते हैं। दोनों धर्म अहिंसावादी है, समझे। परंतु समाधि की बात नहीं कोई करता, और समाधि लगे बिना रोगों का अंत नहीं हो सकता। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि, सहज समाधि है। तो इस प्रकार मैं जो आपको नाम बताऊंगा वो जपोगे और ध्यान करोगे। यहाँ तीसरी आंख शिव की जो है आजकल सभी तस्वीरों में है, वो आप सबके है। जहाँ आप बिंदी लगाते हो, औरतें बिंदी लगाती है, आप टिक्की लगाते हो, ये 10वां द्वार है। हमारे ऋषियों ने मोटे तौर से शरीर के 2 भाग किए, एक तो यहाँ से नीचे 9 द्वार, उनका मुंह बाहर खुलता है, एग्जिट है। तो वो फिर आदमी बाहर से सुगंध, टेस्ट, संगीत बाहर से सुनने की कोशिश करता है, बाहर से सुनना करता है, मगर बाहर तो अंदर जो हो रहा है उसका प्रतिबिंब है। जो हमारे दर्शन कहता है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में भी ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड सारा अंदर है। आपको अंदर घुसने का तरीका बताऊंगा। जब तक ये तीसरी आंख नहीं खुलेगी, जब तक न ध्यान है न कोई योग। पातंजलि ऋषि में योग सूत्र लिखने शुरू किए तो पहले सूत्र में कहा है, समाधि पाद में, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो भग रहा है इधर उधर, ये जब तक न बैठ जाए शांत होकर के, तब तक न ध्यान है कोई योग। समझे? जब ये शुरू में ये काम शुरू किया, मैं तो रेलवे में नौकरी करता था भाई, हेड क्लर्क था, समझे। तो परिस्थितिवश मेरे में तकलीफ आ गई। एक मृत्यु भय लगने लगे, अकारण मृत्यु भय, फोबिया हो गया, फोबिया। मेरे एक मित्र थे श्री राम दुबे, यूपी के, डॉक्टरों का कोई रोग नहीं, वो ज्योतिषी थे, अच्छे ज्योतिषी थे, हस्तरेखा भी देखते थे। उन्होंने कहा ये तो आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा है। मैं तो जानता नहीं था मार्केज क्या होता। उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो ये दुबे जी तो सभी को आना है मार्केज। करेक्ट जी, हमारे दर्शन में इसके उपाय भी हैं। मैंने क्या है? कल जी महामृत्युंजय का जप करो, महामृत्युंजय का जप। वो बड़ा अजीब कर्म कांड था, मेरे बस की बात। मैंने कहा दुबे जी इसको तो आने दो मार्केज को। फिर उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी हो सकता है, तो मैं वो तो जप लूंगा। तो अक्टूबर की सर्दी की नवरात्रि से शुरू किया था, समझा। और एक मतलब दिसंबर के 31 तक पूरा कंप्लीट के लिए हिसाब लगता था। सुबह इतनी माला, शाम को इतनी माला, और सुहाग के साथ आहुति देता था घी की, समझे।
तो इस प्रकार 1.25 लाख खत्म हो गया, मैंने बंद कर दिया। अब रोज आदत पड़ी हुई 2:30 बजे उठ के ठंडा पानी से नहाना। रेलवे क्वार्टर में रहता था मैं, सर्विस के दौरान ये सिद्धि हुई। तो अब क्या देखता हूँ कि शरीर में ऑर्गन है नहीं कोई, ना हार्ट है, ना लिवर है, ना तिल्ली, ना किडनी, कोई ब्लड सर्कुलेशन, कुछ नहीं। मैं पहले कुछ दिन तक पीवीएम हॉस्पिटल बीकानेर में प्रोबेशनल मेल नर्स भी रहा। तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ले जाते थे हमको साथ दिखाने के लिए। तो मुझे मालूम था कौन अंग कहाँ है स्थिति, शरीर में कलर क्या है, शेप क्या है, पर वो अंग कोई नहीं दिखे। नहीं, अंग कहाँ चले गए, मतलब दिखता तो आंख से ही, अंदर कैसा प्रकाश। जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक काला भंवरा होता ना, काला भंवरा, वो भंवरे गुंजन सुनाई दी, पेट में भंवरे की गुंजन। उस पे आवाज पे ध्यान दिया तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा रहा था, ऑटोमेटिकली जपा जा रहा है, जपा शुरू हो गया। समझे? इस तरह से आपको भी हो जाएगा तो फिर याद रख के जपने की समस्या नहीं होगी। समझे? बहुत देर तक वो ध्यान में देखता रहा। रेलवे क्वार्टर्स में था, बच्चों ने टैप खाली छोड़ दिया था खुला, पानी आवाज के साथ गिरा तो आंख खुल गई। फिर बहुत कोशिश की, आंख बंद करके कुछ भी नहीं दिखा। लोगों को मालूम हुआ, वापस करना सवाल, अच्छे पंडित है। उनका क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा हुआ तो कहा जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो। तो लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी आपके साथ भला हो जाएगा। पहले तो मैं समझा नहीं क्यों देंगे, मगर जो परिवर्तन मुझ में आया उससे समझ में आ गया मामला तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि रिजल्ट मिलने लगे ध्यान में मुझे। तो मैंने कहा महाराज ये काम तो नहीं करूंगा, सोना दे और लो वाले हूं। बहुत कोशिश की, मैं नहीं माना तो करने लगा ये जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगा। मैंने कहा महाराज मेरे तो भाग्य में लिखा ही नहीं रहना। समझे? तो ये चीज धन से नहीं मिलती है। और मंत्र दीक्षा भी गुरु द्वारा दी हुई काम, किताब में से लिया हुआ मंत्र काम नहीं करता है। समझे? तो इस प्रकार ये सब योग हुआ, वो समाधि लगी तो बड़ी आश्चर्य हुआ। ये गायत्री का रिजल्ट बताऊं। एकदम बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस पथ पर नहीं चला जा सकता। तो गुरु बना लिया गंगा नाथ जी को। ये 31 दिसंबर 83 को चले गए। भौतिक पिता की डेथ हो गई जब मैं 3 साल का था, और मई में गया था, 5-7 महीने में ये भी चले गया, बिल्कुल अनाथ हो गया। समझे? तो इस प्रकार गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र ही चेतन होता है। आज जितने भी गुरु घूम रहे, मैं आपको बताऊं, इनका कोई गुरु नहीं है, स्वयं वो गुरु है। ये फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, योग नहीं करवाते। योग का मेन उद्देश्य तो मोक्ष है, मोक्ष। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को तो प्रूव कर दिया, दो है नहीं, एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। पश्चिम वाले कहते हैं साइंस इज गॉड। अद्वैत अमेरिका कहता, मैंने कहा ऐसा मत बोलो, गॉड इज साइंस बोलो। ईश्वर ने भगवान को पैदा किया, साइंस तो बाद में आई भाई तुम्हारी। और मैं कहा तुम्हारी साइंस एक ही HIV पॉजिटिव को ठीक कर दो, हमारे वाली साइंस ने तो कई कर दिए। परेशान है, मगर उन्होंने पहले कई दफे मेरे को मैसेज किया जी आपकी पैरासाइकोलॉजी है। मैंने कहा साइकोलॉजिकल ट्रीट कर रहे हो आप बीमारों को, पैरासाइकोलॉजी भी कोई चीज है। आफ्टर थॉट जी रहे हो, बियॉन्ड थॉट जीने का तरीका सीखो। उन्होंने कहा जी आपकी पैरासाइकोलॉजी रिजल्ट देवे लेबोरेटरी में तो ही मानेंगे। मैंने उनको 500-700 केस जो है दे दिए। समझे? रैनबैक्स की रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अरविंद माथुर एक जोधपुर में
मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में मेरे शिष्य। जब लोगों ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो, आप तो दीक्षित हो, कहने लगे भैया सारे संसार के डॉक्टरों से कैसे अलग हो जाऊं। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी आप बाहर घटने बढ़ने की बात तो मत करो, एंटीबायोटिक ज्यादा दे गया, बाहर कम हो गया, हल्का दे दिया, बढ़ गया, आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो, बिलो 50 आ गया तो फिर दुनिया मानेगी, हम मानना चाहे ना माने। तो बिल्कुल नेगेटिव आ गया, HIV वायरल लोड बिल्कुल नेगेटिव आ गया। बॉम्बे में एक बंजारण की नाम की लड़की थी जे हॉस्पिटल में, तो उसका हस्बैंड मर गया, वो रिपोर्ट फाड़ के फेंक गया। एक रीना सिंह आती है बॉम्बे से, कई पेशेंट अब भी लाई है बेचारी, वो कोटा ले आई। मैं 2004 में गया, वो डॉक्टर रिपोर्ट नहीं दे, तो मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा आप FIR करवा दो डॉक्टर के खिलाफ। उसने डॉक्टर रिपोर्ट नहीं दी, उसके 3 दफा टेस्ट किया लड़के के, बंजारण के। फिर पूछा तेरे तो हस्बैंड मर गया, क्या हाँ, तेरे को तो एड्स ही नहीं है। उसके पिताजी ने कहा जी गुरुजी जवान लड़के मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं मुकदमा में जनरल में पढ़ते नहीं। एम्स से एक लैब टेक्नीशियन लड़के आए मेरे पास, उन्होंने कहा गुरुजी जो रिपोर्ट बॉम्बे से आ रही है डॉक्टरों की हालत खराब है। पहले मैं सोचता था डॉक्टर बदमाशी करते हैं, अब मुझे मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको हाईलाइट होने देती। मैंने अबू मणि रामदास को भेजा, सोनिया गांधी को भेजा, मनमोहन सिंह जी को भेजा, कोई ध्यान नहीं देता, समझे। अभी जो मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की शीला कौल, उसके पास गए तो उसने कहा बेटा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी क्योंकि डॉलर की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने के लिए डॉलर आ रहा है, कोई हजारों ही NGOs बने हुए हैं। अब दिक्कत सबको यही है, अगर मैं फीस लगा दूं तो गवर्नमेंट चुपचाप हिस्सा पाती कर लेगी, मैं देता नहीं, सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका वाले भी कहता है ये बिना लेते हैं ये काम कर रहा है। मैंने कहा जी क्या ले बताओ, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, इतने आप बैठे हो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आपको अपने आप से इंटरव्यू करवा गए आप क्या। पहले गुरु भौतिक माता बता जो आज भौतिक शरीर की रचना करते हैं, दूसरा गुरु जो आत्म साक्षात्कार कर, तो कोई जवाब नहीं, बैठ के फंसते, परेशान जरूर है कि ये केवल स्पिरिट से ठीक करता है, मैटर को साथ नहीं लेता, मतलब दवाई नहीं देता, केवल मंत्र से ठीक करता। मगर जब योग शुरू हो जाता है, रुकता नहीं, तो परेशान है कि अब क्या करें। अभी आपको भी होगा, मैं मंत्र बता के ध्यान कराऊंगा 15 मिनट, आपको भी होगा योग मोमेंट। तो इस प्रकार हमारे आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, उन्होंने कहा है कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर ने किसी हद तक टैकल किया है, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं, स्नायु मंडल को टच करते हुए आज का डॉक्टर रहता है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है, पहला 1906 में प्रकट हो गया, अखबार निकला बंगाल से, वंदे मातरम। आज भी हमको इस देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता, समझे। और दूसरे के लिए कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो
वो माइस्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड। तो संजीवनी का मंत्र हम तो जानते हैं, पश्चिम वाले तो समझने में देर लगेगी। त्रेता में लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी, मर जाते तो काम नहीं करते। तो मैं वही संजीवनी मंत्र की दीक्षा देता हूं। महर्षि अरविंद ने उसको सुप्रामेंटल फोर्स कहा, सुप्रामेंटल फोर्स। महर्षि अरविंद ने कहा कि कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, उपनिषदों को देता है, वेदों को देता है, ईश्वर का नाम की देता है, तो उसके आवाज में वो परिवर्तन हो जाता है। आवाज में वो शक्ति होती है, समझे? क्योंकि पहली सिद्धि होगी गायत्री की और दूसरे में सिद्धि होगी कृष्ण की। ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में आज तक नहीं हुई। गायत्री की हुई है, कृष्ण मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, गुरु से दीक्षा लेके मंत्र का जप करते हैं, दोनों ही मोक्ष पाते हैं। मतलब मोक्ष के लिए यहाँ पहुंचना पड़ता है सहस्रार में, वो मालिक यहीं बैठा है। समझे? तो हमारा सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसमें शरीर की व्याख्या जब ऋषियों ने की तो कहा कि 7 प्रकार के सेल से बनता है शरीर, उसके अंदर आत्मा है। समझे सर? पहले वो मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से बनने वाला कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सत्यमय कोष। तो पश्चिम ने विज्ञानमय कोष तक खूब चेतन कर लिया। मैंने उनको कहा कि जब तक ऊपर के 3 कोष, जैसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं, वो चेतन नहीं होंगे तब तक आपका 12 समाज को पूर्ण शांति का आश्वासन गलत होगा। मगर ये वो पैगंबरवादी धर्म है। जो पैगाम दे दिया ईश्वर का, बस उसी को मानते हैं। 3 किताबें हैं उनकी, तैरात, एंजल्स और कुरान। ये तो अवतारों की धरती है। पैगंबरवादी हमारी भाषा नहीं समझेंगे, पर जब रिजल्ट मिलेगा क्रियात्मक तो वो बहुत सच्चे हैं, फिर दूसरे भी नहीं कहने की नहीं बात नहीं करते। समझे? तो इस प्रकार मैं जो मंत्र दे रहा हूं कृष्ण का, वो ये संजीवनी मंत्र है, माइस्टिक है और सीक्रेट भी है। गुप्त भी रखना पड़ेगा, मैं जो बताऊं, और किसी को नहीं बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस नाम को जपोगे तो चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस भी है, ब्लड कैंसर, कुछ भी है, ठीक हो जाएगा। नाम जपोगे ठीक हो जाएगा। समझे? चल ध्यान चाहे करो या ना करो, मगर नाम जपना जरूरी है। रावण देख लो, जपा शुरू होगा तो ही पार पड़ेगी। 1990 से चैलेंज कर रहा हूं। समझे? और किसी ने ये नहीं कहा कि ठीक नहीं हुआ। समझा? तो जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। 80% रोग मानसिक तनाव से संबंधित है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। वो मेडिकल वालों को बस की बात नहीं। वो नशे की गोली दे देते हैं, 4-6 घंटे जब तक नशा रहा ठीक, बाकी नशा उतरते वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। नशा तो हम भी इसका इलाज नशा तो हम भी बताते, मगर वो मैटर का नहीं, भगवान के नाम का नशा होना चाहिए, स्पिरिट का नशा नहीं होना चाहिए। दवाई वाला तो फेल हो रहा है ना। हमारे गुरुओं ने इसको नाम का नशा कहा है। नानक देव जी महाराज ने कहा है भांग। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। चलिए शाम का ध्यान शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुदेव महेश्वरा गुरु गुरु साक्षात साक्षात परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः तस्मै श्री मैं श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय वो आदेश गुरु का वो आदेश गुरु का वो आदेश गुरु का वो आदेश गुरु का वो आदेश गुरु का। वो आदेश गुरु का। चलिए माइक बंद कर लीजिए गूगल मीट पे। ऑटोमेटिकली ये होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी, कुंडली स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो, और ध्यान करो। हम आपको यहाँ मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। 15 मिनट का ध्यान लेके बैठिए गुरुदेव जी से। फिर आपका जितनी देर भी सहज ध्यान लगे गुरु कृपा से उतनी देरी ध्यान में बैठिए। ग्रुप ध्यान का समय 6:30 से 7 बजे के बीच का है।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री दादा, जय आदि जय शक्ति। श्री दादा गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। चलिए जयकारा लगाते हैं श्री गुरुदेव जी का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, श्री गुरु, जय श्री दादा गुरु। जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय। चलिए अपना माइक बंद कर लीजिए सब लोग गूगल मीट पे। जय जय दादा गुरुदेव। ओके, तो आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, दीज 3 days, इन 3 दिन इंग्लिश में सत्संग होगा। दिस सत्संग विल बी डन इन 3 दिस इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज बिकॉज ये इसलिए है कि सत्संग जो है वो भारत से बाहर जाने की बड़ी ज़रूरत है। दिस सत्संग नीड्स टू बी डन इन इंग्लिश बिकॉज वी नीड टू रीच आउटसाइड ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो ज्ञान हमें हिंदी में मिल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। The knowledge we are getting in the satsang is very important, and the people, those who live outside of India, need this knowledge desperately. भारत में शायद इस ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि भारत में हम ज़्यादा उन्नत सोच नहीं रखते। In India we do not need this knowledge very much. But outside of India, people living outside of India, they need it desperately. In India, we do not value this knowledge, and we do not, promote this knowledge. This is not today's habit. ये आज की आदत नहीं है हमारी, ये हमारी सदियों की आदत है, कई 100 वर्षों की आदत है। But somehow this knowledge has traveled beyond seas because of few people who dare to travel, dare to take risk, dare to take this initiative of dharma outside of India. गुरुदेव ने कहा था कि अमेरिका में जाकर विवेकानंद ने प्रचार किया। विवेकानंद के अलावा और योगानंद के अलावा कोई वहाँ गया नहीं, और जो गया उसने इसे पेटेंट करवा लिया। मुक्तानंद जी भी गए पर उन्होंने सिद्धियों को पेटेंट ही करवा लिया। बीमारी, पेटेंट एक बीमारी है। The people, those who traveled for this knowledge outside of India, very few, Yogananda and Vivekananda. Muktananda also traveled outside of India, but the disciple of Muktananda, they made a patent on Siddha Yoga. Even the name of the Siddha Yoga has been copyrighted in America. You cannot use this name. Such a pity on those disciples that they do not know this knowledge cannot be caged or can be restricted by copywriting it. This is a disease. In इंडिया में तो ये बीमारी है, बाहर भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा है. So what we can do,
very few people, those who acquire this knowledge with the grace of the Guru, they must take this responsibility and a charge to take this knowledge outside of India. Very few people will come across initially, I know that, but with the time, we will succeed to take this knowledge to the people those are waiting for this knowledge. समय लगेगा थोड़ा भारत से बाहर जाने में इस नॉलेज को लेके, लेकिन सही समय आएगा कि हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जो इस नॉलेज का वाकई इंतज़ार कर रहे हैं. So my intention is to bring the right prosperity and development in India on the places where we worship and we believe should be promoted. For that, we need money, and that will come from outside of India. In India, we do not have that. That is very bitter truth. हमारे पास भारत में अपने ही विश्वास को डेवलप करने के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है. गुरुदेव ने कहा है कि हमने सोल को डेवलप किया है, मटेरियल को डेवलप नहीं किया. ये भारत की कमज़ोरी है. और अमेरिका ने मटेरियल को डेवलप किया लेकिन सोल को डेवलप नहीं किया. द एक्सचेंज ऑफ मटीरियलिस्टिक मनी एंड द spirituality, the exchange between west and east must be between the soul and the material thing. They will bring us the materialistic development, and India will take the spiritual development to the west. This is the exchange. This is how this work will be completed. In India, if we gather 200, 500, 10,000 people, we can never be united on a single point. हम लोग भारत में कितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन एक पॉइंट को रेज नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया टू रेज द धर्म. ये हमेशा से होता है. जब भी धर्म को कोई पहचान मिली है या रेज हुआ है, जैसे इस्कॉन टेम्पल है, स्वामी नारायण टेम्पल है, दे ऑल आर रेज्ड बाय द पीपल दोज हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे इनिशिएटिव्स को मदद करते हैं. पहले तो लोग इनिशिएटिव लेते नहीं, डरते हैं. डरते इसलिए हैं कि अपमान ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए, नीयत ना खराब हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए. ये सारे जो डर है ना, ये लगे रहते हैं. हिंदुस्तान में कीड़ा है डर का. लेकिन जो वेस्ट में है ना, वो बहादुर है, वो दे आर ब्रेव पीपल. ऐसा विवेकानंद ने भी कहा था कि दे आर ब्रेव. इफ यू डू समथिंग फॉर देम, they will definitely return what you need to develop those things. So it is very much important for this knowledge to travel outside of India. So I tried earlier also. I did it for some time and I really got a very good response from outside of India. They really value this knowledge. But somehow with the love of Hindi language, I couldn't do it in English earlier. मुझे जो हमारी भारतीय भाषा है ना, हिंदी, इससे मुझे स्नेह है, प्रेम है. इसमें बात करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैंने आज तक सारे जितने भी सत्संग किए हैं वो हिंदी में प्रेफर किए. लेकिन ये मेरी बात नहीं है, या फिर हम कुछ लोगों की बात नहीं है. हम 50-100 लोगों की बात नहीं है. बात एक बड़े स्केल पे होनी चाहिए. तो बड़ा स्केल है तो लैंग्वेज शुड बी इंटरनेशनल, दैट इज़ इंग्लिश. सो आई विल ट्राई टू डू 3 or 4 days session in English and rest of the sessions for you people in India. I know you do not need this knowledge. You have your own knowledge. You all are very knowledgeable and you are on the right path. आप सबके पास knowledge है और आप सब साधना कर रहे हो गुरुदेव की, और सबके नॉलेज अंदर प्रकट हो जाएगी. So we must take this knowledge outside of India. All right, clear? ये इनिशिएटिव मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये डेवलपमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ. It is not any kind of bondage or anything. It is simply for the development purpose. We need money for the development.
we need money for the to be in place to continue this satsang, these sessions. We need money. I asked many people in India. बहुत लोगों से मैंने कहा यहाँ पर, अपने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी की, मैसेजेस भी डाले, बट इट्स लाइक बेगिंग, ये भीख मांगने जैसा है। भारत में धर्म के लिए काम करना ना भीख मांगने जैसा है। भीख मांगनी है तो फिर बड़े स्तर पे मांगो काम। तो इसलिए फॉर द डेवलपमेंट पर्पस एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ दीज सत्संग सेशंस, व्हाटएवर, जो भी कंडीशन आज मेरे सामने है या जो भी आई है सत्संग में, वो शायद इसीलिए आई है कि मैं बाहर निकलूं। कुआं मेढक होता है ना, वो कुएं में रहता है, उसे लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन बाहर समंदर भी है। इसलिए अब मैंने ये सोच लिया पक्का कि आई विल टेक माई अप्रोच आउटसाइड ऑफ इंडिया व्हाटसोएवर, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, जितना भी हो, जो भी कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि एक बार अब सोच लिया है, करना है तो करना ही है। फैमिली मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है। वी हैव टेकन रिस्क एंड आई विल डू इट। और मेरे पास गुरुदेव जी की दी हुई नॉलेज है, ब्लेसिंग्स भी है, इसीलिए मैं कर भी सकता हूँ, इसलिए मुझे करना भी है। बट फॉर यू इट इज ऑलवेज फ्री, इट इज ऑलवेज फ्री फॉर यू ऑल। I hope you value this. All the satsang we have done is very, very valuable. Very, very valuable. They are not just satsang or just not anything I have read out from the books. मैंने कुछ भी किताबी ज्ञान नहीं बोला है, कभी भी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। लोग बोलते हैं किताबी ज्ञान है, लेकिन है नहीं। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ रियल है, सब कुछ अंदर से है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 लेवल्स में, ठीक है। तो अभी क्या है कि आई एम डेवलपिंग अ पोर्ट्रेट। मैं एक पोर्ट्रेट बनवा रहा हूँ गुरुदेव जी का। दिस पोर्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट। दिस इज द फर्स्ट एवर पोर्ट्रेट ऑफ कल्कि अवतार का सबसे पहला पोर्ट्रेट है। ऐसा पोर्ट्रेट आज तक बना ही नहीं। दिखने में बहुत सिंपल होगा, दिखने में बिल्कुल सिंपल होगा, गुरुदेव जी की तस्वीर आपको दिखेगी, लेकिन उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सिंपल नहीं होगा। वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आज शायद वैल्यू ना हो उस चीज़ की, लेकिन वो बहुत बड़ा काम है। तो उस पोर्ट्रेट को बनवाने में भी पैसे लगते हैं। एक और कल्कि का पोर्ट्रेट है, बड़ा पोर्ट्रेट है, जो 24 नवंबर को आपके सामने आएगा। All that need money to develop it. To take this portrait outside of India is very important. ये पोर्ट्रेट मैं अपने लिए नहीं बनवा रहा, आपके लिए नहीं बनवा रहा, ये मैं बना रहा हूँ पूरे आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो अमेरिका है या जो यहूदी हैं या जो भी है, उन सब के लिए बना रहा हूँ। तो सबके लिए बहुत ज़रूरी पोर्ट्रेट है। हमारे लिए कितना महत्व रखता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अगर फ़र्क पड़ता तो हम ऋषि अरविंदो को समझने की कोशिश करते। लेकिन जो पोर्ट्रेट आएगा 15 अगस्त को, वो पोर्ट्रेट बाइबल पढ़ने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खोज की तरह होगा। उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, आने वाले समय में जब वो पोर्ट्रेट लोगों तक पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2000 साल में आज तक वो पोर्ट्रेट नहीं बना। लेकिन उस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए भी सहयोग नहीं है मेरे पास।
क्योंकि वैल्यू नहीं है नॉलेज की। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू पे फॉर दैट पोर्ट्रेट. द पोर्ट्रेट इज अंडर वर्क. The knowledge is very important to be raised, to be carried on. If I do not carry this knowledge, somebody else will do, but it will take time for someone to start this knowledge. It will not start immediately. For me, it took me 5 rigorous, hard-working years in Siddha Yoga. I have gone through so much before lifting up this knowledge. It is not easy. It is not sudden. This knowledge did not come suddenly. अचानक से मुझे ये ज्ञान सब प्राप्त नहीं हुआ जिस पे रोज सत्संग होता है, डेली सत्संग होता है. आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो सोच के, बट आई एम डूइंग इट डेली without any preparation. It is not happening by miracle. It is happening with the grace of the Guru. That means this knowledge is tremendous, outstanding, and this is coming from the real source of Guru. This need to be uplifted. ये नॉलेज को उठाना बहुत ज़रूरी है. मैं अगर सत्संग नहीं करता, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स देखूंगा, एक छोटी सी नौकरी पकड़ लूँ, 50-60 हज़ार की नौकरी पकड़ लूँ, उतनी मैंने छोड़ी थी, उतनी मुझे मिल जाएगी. कंपनी आज भी अगर जाऊंगा तो आज भी मुझे वेलकम कर लेगी, पर 50-60 हज़ार रुपये के लिए आई कैनॉट सेक्रीफाइस द नॉलेज. मेरे बीवी बच्चे पल जाएंगे 50-60 हज़ार में, बहुत होते हैं. एक आम फैमिली के लिए, साधारण सी फैमिली के लिए 50-60 हज़ार बहुत. It's enough. 50-60,000 is enough for the family to survive, but sacrificing the knowledge for the 50-60,000 is not enough. This is very dangerous or very bitter truth for us to know that we are not united. We are segregated in the different sectors. हम लोग एक साथ नहीं है, हम लोग पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं. किसी का ग्रुप है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का ग्रुप है, कुछ है, कोई किसकी निंदा करता है. Everybody is backbiting other person. It is what is the reality of our family. We cannot depend on each other. We cannot raise this entire mission as a one. Somebody else is raising separately, this mission is this. Somebody is raising separately, this mission is this mission. So this is very dangerous act. And for us to come together, we all need to have this knowledge of oneness. सर्व खल विदम ब्रह्म जो है ना, वो वननेस को बोलता है. वो एक को सपोर्ट, दूसरे को सपोर्ट करता है, पुल डाउन नहीं करते. वी पुल डाउन पीपल ईच अदर. सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट फॉर द लास्ट 2.5 years. 2 से 2.5 साल में मैंने बहुत कोशिश की है. अपनी तरफ से मैंने कभी भी किसी से विरोध नहीं किया. फ्रॉम माई साइड आई हैव नेवर ऑब्जेक्टेड एनीबडी. आई हैव नेवर criticized anybody from my side first, and I never pulled down anybody from my side. I tried my best to be in a harmony with everyone in India, in the family, but it is not possible to lift this knowledge in group of some people, those who are around. It is very much needed outside. It will take me maybe to bring up 100 English people or 100 people living outside of India. It will take me it might take me 10 years. आप जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हो ना, 500 लोग देखते होंगे रिकॉर्डेड वगैरह सब मिला के. 100 लोग इकट्ठा करने के लिए जो बाहर से होंगे, मुझे 10 साल लग जाएंगे. 100 people to bring to go to the 100 people, to unite with 100 people outside of India, it might take me 10 years, and it will be very hard time. So if I start today, only then those 100 I can reach.
just to connect with them, that this is the real knowledge. We want to give this knowledge to you. We want to give this knowledge to you. You come to India, you develop us. What we have is the knowledge. Take this knowledge, benefit yourself, and develop the dharma in India. इंडिया हिंदुस्तान में जो धर्म को डेवलप करेंगे, जो इस ज्ञान को उठाने में मदद करेंगे ना, वो विदेशी ही होंगे, क्योंकि उनको नॉलेज है इस चीज़ का। मैंने पढ़ा था विवेकानंद को, गुरुदेव को मैंने सुना कि भारत में धर्म, विवेकानंद को भी मैंने सुना कि धर्म बचा हुआ है सिर्फ भारत में, लेकिन भारत उसे उठा नहीं पा रहा। उठाने के लिए सपोर्ट चाहिए पश्चिम की। इसीलिए पश्चिम जब कहेगा आके आप सबसे, विदेश से आएंगे और आपको कहेंगे कि ये नॉलेज है, ये रियल नॉलेज है, एंड यू आर नॉट सपोर्टिंग इट, यू आर लुकिंग एट, ये दूसरी तरह से देख रहे हो। आज लोग क्या सोचते हैं, हम जब थोड़ा पैसा जुगाड़ करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं कोई काम करने के लिए, तो लोग कहते हैं वो पैसा मांग रहा है, वो पैसा खा रहा है। समाधि के लिए, गुरुदेव के समाधि के लिए कोई मांग लेना तो वो पूरा परिवार बदनाम कर देते हैं गुरुदेव का, कि उनके परिवार पैसा मांग रहा है, ये पैसा मांग रहा है, ये पैसा मांग रहा है। तो यहाँ पर लोगों की जो मानसिकता है ना, वो पैसे में अटक गई है। उनको सिर्फ पैसा ही दिखता है, हर काम में पैसा दिखता है। ये मानसिकता है, और ये मानसिकता नहीं है, ये बीमारी है। इसीलिए कोई गुरु भाई उठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता। No single person can stand and take the responsibility, take the charge for the development, because it involves transaction of money, and everybody is afraid of insult. They think they will be blamed. If something happens to the calculation of the money here and there, they will be blamed, and their progress will stop. Spiritually, it will not happen. Nothing will happen. If you are true to your guru, money is nothing. Money is nothing. To raise the dharam, to raise the knowledge, to raise the satsang, money is nothing. It is like an iron. Gurudev told this. It is, if somebody gives you iron, if somebody gives you money in exchange of dharam, it's like trading gold with the iron. It is truth, but we have to do it. We have to take our gold to outside, because here we do not have value for this gold. With very heavy heart, I have realized this truth. A single person from outside of India, he is a Muslim, not Hindu, single-handedly for 14 to 15 months made me survive to do this session, do this satsang. Single person outside of India and doesn't understand Hindi. मैंने हिंदी में सेशन किए 1.5 साल तक। उसको सपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति है वो हिंदी समझता नहीं है, गुरुदेव का शिष्य है, हिंदी समझता नहीं है, लेकिन नॉलेज समझता है। 14 सेशंस इंग्लिश के देखे उसने, इंग्लिश के 14 सेशन देखे सिर्फ, और उसने मुझे मैसेज किया कि ये जो सेशन है ना, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है, इससे मुझे बहुत मदद मिली। उन 14 सेशंस को मैंने शुरू किया था, 2020 की बात है ये। उन 14 सेशंस को देखने के बाद उसने 1.5 साल तक, 14 से 15 महीने तक अकेले ने सपोर्ट किया, और मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, एक भी सेशन नहीं किया इंग्लिश में। जो भी किए थोड़े बहुत किए बस, लेकिन कुछ नहीं किया। डिस्कनेक्ट हो गया वो थोड़ा सा, बट वो कर रहा है, अपना साधना कर रहा है, लेकिन नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो गया। और लास्ट 3 महीने जब वो नहीं कर पाया, लास्ट 3 महीने मैंने पहले एक आप सबसे कहा था कि सपोर्ट करो, इस चीज़ को सपोर्ट करो, सत्संग को सपोर्ट करो। 10,000 रुपये भी महीने के इकट्ठे नहीं होते हिंदुस्तान में 100 लोग मिलकर। उल्टा चैनल अलग से बंद कर दिया, चैनल अलग से बंद कर दिया जोधपुर आश्रम ने। My channel, which was such a prestigious and knowledgeable channel, was blocked, put down by Jodhpur Ashram just because I was raising money. और उस चैनल से कितना आता, मैक्सिमम 1 साल का 900 रुपये।
and it was such a crime to raise the money to survive. और ये क्राइम है हिंदुस्तान में, धर्म को उठाना एक क्राइम है. ये जो सत्संग होते हैं ना, these sessions I am doing, it is not only 7 to 8 p.m. It's not like that. It needs your entire concentration, your mind at one point. It mind need not to wander everywhere. मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है. I do not go everywhere whole day. I stay at home. I wait, I sleep, I read, I understand. But when I sit in the session, something else happens. This is not an ordinary satsang. This is not an ordinary sessions and knowledge. This must be uplifted. If you can't do it altogether, somebody else will do. And in whichever language they like it, I'll learn that language, I'll do that in language. So I have decided 3 days, at least 3 days I must give them. And rest 4 days, it's free for you, free for all, every one of you. Enjoy it. All right, clear? Okay, so today's session, I am starting today's session. It is in English, and I'm removing some comments from YouTube. People are not they oppose such satsangs, so they put such kind of messages in YouTube to stop, to hinder, to disturb. But it's all right. It happens. Okay, so today's session is we are doing Siddha Yoga. Gurudev Shri Ramlal Ji Siyag. He gave us initiation in Siddha Yoga. Siddha Yoga. The name of the Siddha Yoga means the empowered yoga. Empowered means something which is having a prana, or which is living, or something which can initiate you in the same manner which it is already in the state of enlightenment. So Siddha Yoga means enlightenment, or the something which is empowered, has a light or the power which can initiate something which is asleep, or which is something which is dormant. And if you come in contact with something, it enlightens you, it awakens you. So Siddha means empowered, awakening, enlightened. And moreover, the Siddha Yoga means the Maha Yoga. That means this yoga contains every other yoga in it, like Kriya Yoga, Sahaj Yoga, Hatha Yoga, Lay Yoga, Raj Yoga. All other yogas are included in this yoga. This is the Siddha Yoga, Maha Yoga, Raj Yoga. We also call it Raj Yoga, and we also call it Kundalini Yoga. Kundalini, why we call it Kundalini Yoga? Because Siddha Yoga, when Gurudev initiate you into the Siddha Yoga, he gives you the mantra, Sanjeevani mantra. It's a 3 words mantra, sacred word.
of Radha and Krishna, it awakens a dormant power in you, which is called the Kundalini. So Kundalini, what Kundalini does in actually, Kundalini unblock of unblock the path on which your conscious or the Chetana travels. Like I have a knowledge or the conscious at certain level. When my knowledge or the conscious will go beyond to the maybe into the subconscious or the deeper conscious, what it will do, it cannot go into the deeper conscious on its own because the path is blocked with my karmic bondages. So what Kundalini will do, what mantra will do, the mantra will give power to the Kundalini to unblock the path. So when the path will be unblocked, the Chetana, the conscious will travel deep into the deeper conscious, where all kind of secrets or the knowledge or who am I, from where I am coming, and the detailed knowledge about myself, about the supreme, about the guru, about everything is you will find on the path of consciousness. We call it the path of Chetana ka path. In Hindi we call it Chetana ka path. In English we can call it the path of the consciousness, the path of the consciousness from the lower conscious to the higher conscious or the deeper conscious. So Rishi Aurobindo has defined this consciousness on the level of the mind, lower mind, then higher mind, luminous mind, enlightened mind, and the super mind. So he has his own definition about the transformation of the mind. It is the same thing as we say it in the Kundalini Yoga or the Siddha Yoga, that we ascend towards the deeper conscious or the higher level of the mind. So this Siddha Yoga, once you take the initiation from the Gurudev Shri Ramlalji Siyag, your journey starts with the help of Kundalini. It continues till the end. And what is the end? End is the moksha, the liberation, final liberation. Liberation means you are free from the bondage of life and death. You will not have to take birth again due to the karmic bondages. You are free from the karmic bondages. So this yoga serves the purpose of settlement of your karmic bondages. There are three type of karmic bondages: mental bondages, physical bondages, and spiritual bondages. Spiritual bondages, when we are born at a certain date or the time, we see the horoscope and we see our planets are placed in a certain position due to which our career is defined, our problems, marriage, and everything is defined. And we can find out with the good knowledge of astrology, palmistry, numerology, with the date of the birth and the numbering system, that what is our life, how it will go. So the problems we face during our life can be three types of problems. As I said, the bondages, due to the bondages, karmic bondages, those three problems will be removed or will be cured. The diseases, we call it diseases, these diseases will be cured while you are doing this sadhana or doing this Siddha Yoga. So any problem in your life, generally from the three departments, three quarters: physical, mental, and spiritual, these all problems can be solved in the Siddha Yoga. You need not to do anything else, anything, any remedy you need not to do. Like somebody do the remedy wearing a stone, doing some kind of rituals, yajna or any kind. Once you do the Siddha Yoga, you chant the divine mantra, you need not to do any kind of remedies or any other kind of you know type of such sort of things you need to do to evade of evil things, or you feel the negative energy and all these things, you need to do some kind of yajna and anything. You need not to do any kind of anything. Even somebody, if you somebody says your house is haunted, maybe your horoscope is haunted, maybe you have some bad evil eye on you, that is why you are suffering in your life. So all these negative energies which we cannot see, which we cannot handle, and we do not have any kind of knowledge about it. So even in that case, we call it the spiritual problems in actual, Davic problem. So even somebody is suffering from these kind of problems, if he recite or chant this mantra, Gurudev's Sanjeevani mantra, he can get rid of these kind of negative problems. If you are suffering from any kind of physical problems, physical diseases, you chant this mantra and you have to take your regular medicines also. Because Siddha Yoga never
ask you to stop the medications, because medication also helps to get rid of the diseases. But when you do the chanting, mental chanting of the mantra, it helps you to get rid of the disease. So you must keep taking your medicines also. So you should not stop it. All right. And third problem is the mental problems. The major problem, the most of the population is suffering from the mental problem, is the thought process, is the depression. Depression is a very common cause of all other problems. All the lifestyle problems are due to the mental problems. We think a lot, we worry a lot about. So when we do this chanting and do meditation for 2 times in a day for the 15 minutes, our mind gets calmed down. So if our mind is stable and calm, then we get rid of mental problems slowly. So first problem, which has been, if you're suffering from any evil eye or any kind of spiritual problems, that will be resolved firstly. And if you are not suffering from spiritual diseases, if you are suffering from mental disease or physical disease, the first thing is the mind to be calmed down. So first your mental problem will be solved, then your physical problems will be solved. Many people feel that their problems, physical problems, is not been solved, and they raise the question against Gurudev that I am chanting this mantra, I am doing meditation, but I am not cured with my physical diseases. It might be fake. It does not work like that in actual. When we say it cures all the diseases, it does not tell you that this Siddha Yoga is to cure your problems only. Siddha Yoga primarily does not cure your diseases. It primarily liberates you from the karmic bondages. So all the problems we have is due to the karmic bondages. It is not that it will evade you or free you from the particular disease one by one. You have sugar. So first let's remove the sugar. Then you have a back pain problem. Let's remove the back problem. Now you have a mental problem, OCD. Let's remove the OCD. You have evil eye on you, negative energy. Let's remove. It does not work like that. It does not free you from the particular disease. It free you from the karmic bondage by which you are having a trouble. If you are having a sugar disease, that is due to your karmic bondage. So it will not remove the sugar, it will remove the karma. So removing that karma, how much time does it take, is a separate thing. But to remove that karma is, that means to surrender that karma to the Gurudev. But this is a deeper philosophy. We do not reach to that philosophy of working style of Siddha Yoga. We just think that sugar is not curing. I do not know what is the reason of my sugar. What is the karma I have done, because of that I have got the sugar. So first, what Gurudev will do, I have to surrender to the Gurudev with full faith. I have to bow down to him. I have to respect him, pay him the respect. It does not matter how much time does it take. But the point is, he will take off, or he will help me to get rid of that karma. So how he does, how he free us from the diseases, he free us from the karmic bondages. So it takes time. It is not the single karma we are facing. Some disease if we are facing, it does not mean that the single karma is causing that disease. It might be the 10 different karmas by which I am facing particular problem. I have a back problem, spondylitis. It might not be a single karma. So I might have a 10 to 15 karma associated and giving me the combined result as a back problem. So what Guru will do, Guru will not evade this problem. Guru will somehow hold that problem. So it will not separate spread, or it will not hurt you in the future. It might go up and down. All right. So what Kundalini will do, what this mantra will do, it will free you from the bondage. So this is how it works. So we cannot blame Gurudev that my disease is not cured. Many people on the internet, they uh, after doing it for the 2 years, 1.5 year, even the 2 months or 3 months, participants, disciples, they start arguing that this is not happening, that is not happening, because they do not know the philosophy and the science of the Siddha Yoga. It is the science. Once Gurudev said, when I went to the West, when Gurudev went to the West, people said science is God. Then Gurudev said, you're calling it wrong. You are understanding it wrong. It's not the truth. Science is not God. God is science, because God
who made the human. Then human discovered the science. Human did not made the science. Human discovered the science. Science was already there. So first science is being, we are the human, our body is the science. So this Siddha Yoga, how does it work? It is a very scientific process. So when we ask Gurudev to remove our problems, our diseases, it's not as simple as it looks during the prayers. So we call it, do the prayers to the Gurudev for the removal of the problems and all. But somehow it does not work like that for him. Okay, so Siddha Yoga, what it does, it free us from the bondages due to which we are suffering. So finally, when Siddha Yoga remove the diseases, the karmic bondages causing the diseases, after that it start removing the other karmas also, by which we might be benefiting but with the wrong way. So our path starts changing. This is called the change in the lifestyle. So now this particular thing is been mentioned in the Patanjali Ashtanga Yoga. We call it in the Jati Parivartan. Jati means, the Gurudev says, the human is of three kind of jati, three kind of people in this world. Man is of three kind. First, tamasic, the negative people. Rajsic, the workaholic people. And the first is Sattvic, the positive people. So Sattvic, Rasik, and Tamasic. These three kind of people. These three, the caste, we call it the Jati. Jati means the type of the people, not the caste. Type of the people. So what happens? The superior level is the Sattvic people, the positive people. The people those are negative will start transforming into the Rasik. Rasik will start transforming into the Sattvic, and the Sattvic will transform into the non-type, means free from the type of the man. So he will not be under the control of these three gunas. We also call it the guna: sattvic gun, rajasic gun, and tamasic gun. So the person will be free from the effect of the guna. Guna make us do work. How we do some work is depending upon the guna. If we do something with a positive mind, sattvic gun. If we do something with the benefit or exchange of something, rajasic gun, to survival instinct. And for the tamasic is, when something we do with the greed, or something with the with our own benefits, with our body. Our attachment is to our body only, to ourself only, to make us selfish. So once we are removed from the bondages which causing the disease, we start the transforming. Now, if a disciple surrender to the Gurudev and do not question it on the way that Gurudev, my disease is not getting cured. You do it on your own pace. I am just surrendered to you. It does not matter that I get cured first or my transformation happens first. Gurudev takes a call. So the transformation of a person from negative to positive and positive to the beyond of these three types of gunas happens simultaneously, because the bodily diseases are caused majorly by the tamoguna, because it is attachment to the body. Tamoguna is attached to the body. If you are released, you are free from the tamasic guna, automatically the bodily disease will be slowly removed. All right. So these three gunas causing are the different problems. Even the sattvic guna causes us the problem. We call it the ego. When we do something with the mind of that we are doing something for the betterment of somebody, or we have helped somebody, we raised somebody, we did this for the country, we did that and that. When we start taking the credit for the good work also, that creates the ego. So ego is also a problem. So when transformation happen, all the types of the transformation is been completed. You are free from every kind of thought process. People say the point where we get the enlightenment is the point when we are thoughtless. Thoughtless is not the point of the samadhi. It is being the state of the free from the bondages of all the karmas. Thoughtless. What I do, what I feel best at that time, I do that. All right. So this is the very basic information about Siddha Yoga. How does it work? Because if you are new and you come in the contact with Gurudev, somebody says you all your diseases will go off, and after
time chanting the mantra and doing the meditation, you feel that my diseases are still there and you said it will be gone off, you might lose the interest in Siddha Yoga. But you must know the philosophy and the scientific reason how the Siddha Yoga works. Once you get Gurudev, that means it is the permanent cure. It is the final path of the ascension. It will liberate not only you from the diseases, but it will liberate you from the circle of life and death. So Siddha Yoga is the final path, final initiation. Gurudev says it. This initiation is the final. After this initiation, you need not do any kind of initiation. You need not to do any uh, any kind of separate things to ascend in the spirituality. You have not to do anything. It's done. You just chant this mantra and sit for the meditation for the 15 minutes. All right. When you start meditation and when you start chanting the mantra, it is not something. This path is not the black path or the path of the darkness that you are doing for some time and you cannot analyze yourself. Do not depend upon the anubhutis. During the meditation, you might have some kind of anubhutis, feelings, or some kind. Do not depend upon those things. I saw the light, I saw the snake, I saw something, or maybe I felt something in my back. These all kind of, during the meditation, you come across these kind of experiences. There are million type of experiences. If you will try to find the meaning of the every feeling or whatever you saw in the if you saw in the meditation, if you will try to find those things, it will waste your time. So you need not to waste your time for the what you see in the meditation. What is the main thing to track your progress? The main thing to track your progress is your behavior. See the change in yourself. The real mirror of your practice, your sadhana, is your behavior, your character. Is your character changing? You cannot change the world, but if you change from inside, the world will change from the outside. This is the basic. So when you start meditation, when you walk on the path of the Siddha Yoga, you must remember the actual progress can be traced with the character, your character, nothing else. Whatever you saw during the meditation, somebody tells you, oh, you saw the light, you have reached to the Agya Chakra. Oh, you are feeling this, you saw this and that thing, you reached here, crown chakra. And after some time, you feel depressed. You say, oh, I am not feeling that kind of energy for the some time. What happens? I came down from the crown chakra or the Agya chakra. So till you have a question about your progress, understand you are just a child in the sadhana, in the practice. The day will come when your answers will come from within. Every answer. Till then, do the chanting, do the regular practice. Regular practice, sitting in the meditation is very important. Why very important? Because when you are doing the sadhana, what is the ultimate goal? Is to get into the samadhi. And samadhi means this is your body, it is getting unite with the supreme. What is supreme? What is supreme? Supreme is this nature. We called it prakriti, nature. This night happens, then day happens. The sun rises, sun sets. Moon rises, moon sets. There are different kind of seasons. There is winter, there is autumn, there is summer. So there are different seasons. Every time we know that this season will come. Now this is the rainy season, this is autumn. How do we know? Because this is into the rhythm. This nature is already is in the samadhi with the supreme. So we are ascending to unite with the supreme. So how we reach to the samadhi? Nearest to us is what? Nature.
So when we do the meditation on a fixed timing, a regular meditation, regular chanting, continuous chanting, first we get into the rhythm with the nature. It's like, uh, launching a satellite. Suppose we are launching a satellite to the somewhere very far away. So what we'll do, we need a direction, right? We need a direction of the Pluto. So when we will set the satellite from here, we will not direct set it to the Pluto. What we'll do, we will send it to the moon, means on the outer orbit of the moon. So satellite will go from here and go into the orbit of the moon. So once we know the direction, if we give a push from here, ignition from the here, because they have 2 or 3 or 5 ignitions during the flight of the satellite. So first ignition they do on the earth, it reaches to the moon. Second ignition they will do again when they give the direction to the next planet, nearby planet, or the direction wherever they want to send it. So the ignition they will go when they will see the direction the moon is at the right place. If we give the ignition right now, it will leave the orbit of the moon and will go directly towards that particular planet or wherever we want to send it. So what is happening? We need to bring it into the rhythm to ascend forward further. So first we are not into the rhythm of the nature, because when we feel hot, what we do, we switch on the AC. When we feel the cold, we switch on the heater. And there are a lot of things. When we do not have light, we switch on the light, we make it a day. So we are now very far away from the nature. So first the meditation, the regular meditation, the continuous meditation, how it will help you to come in the contact with the nature. So your transformation in your body will happen according to the nature. You feel heat, you will feel heat at times, you will feel cold at times, you feel many kind of different kind of exercises which we call the yoga. It will happen slowly. Your pranayam will happen. So first thing, to come in the contact with nature, it will happen automatically. You need not to do it. What you need to do is chanting the mantra, sitting the meditation at the fixed time, like we do. What we do, we sitting for the meditation 6:30 in the morning, 6:30 in the evening, continuous for the 2 years, almost 2 years, 2.5 years, I guess. So it made us drift really faster towards the association towards the nature. So this is all science, exactly science. But it is not a miracle. Somebody tells you about Guru Siyag Siddha Yoga, it will cure you, it will raise you, it will this do this and that. Somebody, few people come, there are siddhis, there are powers we get, power to transcend things, power to go invisible, power to travel at some other places, going out of the body. This is all happens, but we cannot target these things. What should be our target? Our target should be the regular meditation and the continuous mantra jap, so that we come in the contact of the nature. Then from the nature we go beyond to with the ultimate source supreme, to get the samadhi with the supreme. Then the final transformation happens. And how you track your sadhana, there is another method. First is your behavior, your character, it will change. Second thing, how you track it, once you start chanting the mantra seriously, after 15-20 days, Gurudev says you will feel the ajapa jap. The term ajapa jap is again a science. Science means it will start on the auto mode within, inside you. You will feel the mantra is on the continuous mode, like you are singing a song, favorite song, and you feel the song is still, in the loop in my mind. Something is in the loop going on. You feel that, right? This is called the ajapa. The mantra will be in the loop, but the song you feel in the loop is in the mind, which will go away after you shift your attention, or after some time it will go away. But the Sanjeevani mantra, as I said, is the empowered mantra. The song which was in the loop is not empowered.
But the mantra, this is a Sanjeevani mantra which Gurudev Ramlal Ji Siyag gives you, is the empowered mantra. There is no difference between the mantra and the Gurudev himself. Mantra itself is Gurudev. It is enlightened. So when you chant that enlightened mantra, this is like a sparkle, and you have everything in you. You have a candle, you have everything. In India, we call it a lamp. We have a lamp, we have oil, and everything we have. We just need a light to enlighten our lamp. Similarly, you have everything. This enlightening mantra is like a sparkle. It will go inside you 14 days. Continuously do it with serious devotion, and you will feel that this is on the continuous mode now. Till you live, this mantra will be on. How you will know this mantra is going on? Suppose you wake up during midnight, you are thirsty, or you want to go to the loo. You will feel the mantra is chanting. You did not recall it to chant it, but you start chanting it. How it came? Because it was already going on. Similarly, there are many instances you will feel it. You are doing meditation, and somehow you wander into the some thoughts process. When you come back to the realization that I was doing the meditation, you will feel the chanting was going on. That is also the ajapaja. There was a very important topic that says, we know there are seven kind of people uh, in the world. There are seven people like me in the world. Have you heard this kind of thing? Where are those seven kind of people? You know that they are within seven layers of my own. We call it sheath, seven sheaths. So when we sit in the meditation, who blocks us to reach the higher level? It's me who stops myself for ascending, because I have seven layers of my own. First layer is the body. I have any kind of problem in my body. My legs are aching, my head is aching. I cannot sit for the meditation. So me being a body, stopping myself. If my body is all right, I'm sitting, it's all right. Then comes my prana, which because of which I'm breathing. The air system within us, the air circulation within us. There are different kind of air, 10 kinds of air, five major pranas: apan, vyan, saman, udan. So second is, what is prana? It is associated with our relationships. I'm somebody's daughter, I'm somebody's father, I'm somebody's uncle. What will be happening with them? What will be happening with him? Oh, my shop is open. Did I close it? Oh, that is happening. So, second me is the prana, which is stopping myself going into the deeper meditation. Third me is the mind, means there illogical things are going on. Something which does not exist in reality, but you are into the deep thought of something which did not happen, or which might be you thinking will happen in the future, which doesn't have any kind of reality, or the ground is called the mental thoughts. So third me, which is stopping myself to ascend, is mind. Fourth me is the knowledge. Now the during the meditation, many questions will arise: how this happens, how that happens, and you will start finding the solutions for those problems, and you'll slowly you'll start finding the solutions also during meditations. But it is the blockage. It is the fourth me, knowledge me. Fifth is bliss me as a bliss. Just hold on. Just hold on. Okay.
My recording stopped actually, so I need to record this program. I will publish it later. I also publish it with the headings and everything, whatever we discussed. So due to the space problem, so recording stopped. I restarted it. Okay. So fourth me, who is stopping myself to ascend, is knowledge me, and the fifth is blissful me. Oh, I'm in such a good state. I'm so happy. Sitting in the meditation, but I'm in a blissful state. The bliss also stops the progress in the meditation. It doesn't let me go into the deeper meditation. I feel good. I just without any reason I'm happy. I'm good. That is bliss me. This is fifth me. Sixth is the chit. We call it the chit. Chit in Hindi. In English, what we should call it? The entire world is created with the three gunas: sattvic, rasic, and tamasic. These three gunas together is called the chit. This is from the first element, super element. We call it the super element that come from the Shakti. The Prakriti, first thing is created is the Mahachit. These three gunas. Everything is created with the three gunas. My body, mind, everything is created with this. So far, the sixth me is the Chitta. That my creation has been done. Start has been done. So Chit stops me. Then it purifies from the impure Chit to the pure Chit. We call it bliss becoming and being. So being is the seventh, but before being there is becoming, that I am transforming. Chit, which is the transformation, actual transformation which happens, is of sixth me. So that is the sixth layer which stops me going into the final yoga, unity. And the seventh me is the truth. And when I realize the truth, I am uniting with the one, myself. So when somebody used to say there are seven people like me in the world, that world is not outside, that world is inside. And those seven me's are physical me, prana, me, mind, knowledge, bliss, becoming, and being. So when I sit for the meditation, even for the first time, the first thing stops me. Oh, I cannot sit properly. Second thing is my relationships, my attachment, my bondages to the different people. Third thing is my mind is wandering to the illogical things. Then my knowledge stops me. Then my bliss stops me. Then my transformation stops me. Then comes the truth. Finally, ascension. So that is the Atman. So the ultimate thing, which is Atman or the Supreme, is the ultimate truth. So where is the Supreme? Wherever the truth is, Supreme is there. It is always there. Truth was always there. When I didn't know it, when I know it, when I'm knowing it, it is always there. So God is always around us in the form of truth. So the search is of truth, myself, the seventh, the truth. So it is the search of my own, the true self, the one and the only. So this is how the meditation progresses. That's why we sit for the meditation daily. So the problems we come across during the meditation, you need not to worry about it. Oh, only thought process is going on. I cannot sit for the meditation. I sit for 2 minutes and the thought comes, this and that happens. You need not to worry about that, because that is not outside. That is you, your own. You have created it. So you can bypass also yourself. All right. So I think that is good for today. And I hope you have the basic understanding of Siddha Yoga, what it is, how does it work on the diseases, karmic bondages, and what happens during the meditation. One more thing, Ajapa Jap, after 15-20 days, you feel the continuous cycle of Ajapa Jap, the mantra in you for the lifetime. But beyond that, there is another state, which is called the Anhat Nada, the internal sound, which you know as a tinnitus. The voice is coming from any of the ear or both of the ear. You go to the doctor, doctor will check your hearing power. He'll say your hearing power is decreasing, and in 5 to 7 years you'll go dumb. Sometimes it is not that, because doctors do not know it.
There is a problem. Tinnitus is a disease. But the people, those are on the path of the spirituality, kind of some sacred chanting or a sacred path, spiritual path, they start hearing this sound. People misunderstand this as a tinnitus. We'll talk on this tomorrow. Okay, we'll understand how we identify it is internal sound and it is not the tinnitus. I have made 5 sessions on this topic, small 10 minutes each. You will find it in the English sessions. So if you're watching this session, you think you have the tinnitus or the internal sound, that is his sound, the Parbrahm sound, Anadanath, the spiritual sound, which takes you further into the deeper conscious for the unite to the Supreme, if it is that. So five, you just search in on this channel what is Anadanath, and you can also search difference between Anadanath and tinnitus. What is the benefit of internal sound? Oh, sorry, internal sound. You write what is internal sound, difference between internal sound and tinnitus, and benefits of the internal sound. On this channel you will find these 5 sessions, 10 minutes each. You can watch that also if you're watching this session. All right, so tomorrow is Saturday. Tomorrow we'll meet at 7 p.m. for the English session, and if you want to join the meditations, then join at 6:20-25, 15 minutes of meditation, but we keep the time between 6:30 to 7 p.m. All right, so tomorrow morning first we'll meet with everyone tomorrow morning at 6:30 for the meditation only. In the morning, Indian Standard Time, we do only the meditation in the morning. In the evening, we do the meditation, and this satsang, we call it the satsang. Sat mean the truth. Sang mean to be in the company. So be in the company of the truth. We call it the satsang. So we do it every day, 7 p.m. Usually we used to do it in Hindi, but now we'll do it English in 3 days: Friday, Saturday, and Sunday. All right. So see you tomorrow at 6:30 a.m. IST. Jai Shri Gurudev, Jai Shri Dada. जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। Jai Shri, दादा जय श्री गुरुदेव Jai Shri, Jai Shri. राज